जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल शेयर कर रहा है आपके साथ टॉप 4 इंडियन लिकर स्टॉक्स। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी बोलेंगे चीयर्स टू प्रॉफिट्स। तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा के अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब अगला वीडियो आए हमारा तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला लिकर स्टॉक है रेडिको खैतान, जिसकी जर्नी शुरू हुई थी 8 PM ब्रांड से। 8 PM ब्रांड से प्रीमियम तक का सफर, जर्नी ऑफ ग्रोइंग प्रॉफिट्स। Radico Khaitan stands as one of the most recognized IMFL Indian-made foreign liquor brands in India. Originally known as Rampur Distillery Company, it focused on distillation and bottling for established brands and armed forces canteens. In 1997, Radico Khaitan ventured into its own branded IMFL products, launching 8 PM whiskey, which quickly became its flagship brand. अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेडिको खैतान के फाइनेंशियल्स। The company's revenue increased by 19.2% year on year, reaching rupees 1,140 crores. In Q1, financial year 2025, IMFL volumes declined by 4%, but the prestige and above P&A category saw significant growth, with volumes up 14.3% and value up 19.1% year on year. P&A now contributes 43.4% of total IMFL volume compared to 36.5% in Q1 financial year 2024. Net debt increased due to inventory buildup and higher receivables, but the company is focused on improving profitability, cash flow, and working capital. Radico Khaitan aims to significantly reduce debt by financial year 2026 and then distribute cash to shareholders. अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेडिको खैतान के न्यू एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स। The company has launched several luxury products: Rampur Asava Single Malt for approximately rupees 10,000, Sangam World Malt Whiskey for 4,000 to 7,500, and Jaisalmer Gold Edition Gin rupees 4,000 to 7,000. Investments continue in brand building through targeted marketing and premium product launches like the Magic Moments Music Studio series in partnership with Saregama. The focus on premiumization positions the company to capitalize on growing luxury segment. इसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स की एक खास बात क्या है कि जो इंटरनेशनल मतलब कि वर्ल्ड फेमस सिंगल मॉल्ट इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट पे आप देखते हो ड्यूटी फ्री पे मिल रही होती हैं, उनसे महंगी इसने प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं और वो बिक रही हैं। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है उसको इसके प्रोडक्ट जो है ना अच्छे लग रहे हैं। अब हम रेडिको खैतान के चैलेंजेस एंड फ्यूचर आउटलुक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। The company faces increasing competition, particularly in the P&A category, and raw material price volatility remains a challenge. However, prices are expected to stabilize. Management is optimistic, targeting mid-teen margins by FY 2026, with modest growth in the regular category and an overall growth expectation of 4 to 5%. Radico Khaitan plans to invest rupees 70 to 80 crores annually, focusing on malt production and maturation capacity. New whiskey brands in the upper prestige segment are also in the pipeline. Overall, Radico Khaitan is a strong company solidifying its presence in the premium segment. While challenges exist, the company has a promising outlook for future growth. अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रेडिको खैतान का टेक्निकल चार्ट। ट्रेंडिंग स्टॉक है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम्स का रुझान है। कोई भी सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल डिप आए तो उस डिप पे मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया बना के। For our research services, visit our website iamrakeshbansal.com. Under our offerings, click on Research Services. In intraday segment, we provide intraday and BTST trading picks in cash and option segment of the market. In option and index segment, we provide positional, stock and index option trading picks. In future segment, we provide positional stock futures and short-term index future trading picks. Under commodities, we give short-term trading ideas on gold, silver, crude, aluminium, copper, and zinc. Under our mentorship program, we provide short-term, medium-term, long-term, positional, and momentum delivery picks. To know more about us, contact us via WhatsApp. The number is 9991611879. अब हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ सेकंड लिकर कंपनी, जिसका नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तिलक नगर इंडस्ट्रीज को देखें तो इंडिया टॉप
ब्रांडी ब्रांड है और ये आई कर रहा है डबल डिजिट ग्रोथ को। Tilaknagar Industries Limited is a leading manufacturer and seller of Indian-made foreign liquor known for producing India's best-selling premium brandy, Mansion House Brandy. The company boasts a portfolio of over 15 brands across various spirits categories, including brandy, whiskey, gin, rum, and vodka. अब हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ तिलक नगर इंडस्ट्रीज की रीसेंट परफॉर्मेंस। While southern India, accounting for over 85% of volumes, saw a slight 0.1% year-on-year decline due to elections, management anticipates a rebound post-elections. The company achieved its highest ever Q1 operating profit of rupees 50 crores, a 30.8% year-on-year increase driven by cost optimization and a larger share of premium products. Product strategy focused on expanding demographic reach through new premium launches, particularly in brandy. Green Apple Flandy, launched in Telangana and Andhra Pradesh, quickly gained a 20% share of Flandy volumes. Mansion House Brandy continued its reign as India's top-selling brandy and the 8th largest spirit brand globally. अब हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ फ्यूचर आउटलुक ऑफ तिलक नगर इंडस्ट्रीज। Management projects double-digit volume growth from Q2 onwards, fueled by improved operating conditions and strategic initiatives. Despite Q1 disruptions due to elections, the company maintains its guidance for mid-double-digit growth for the full year. Overall, Tilak Nagar Industry, leveraging its strong brands like Mansion House, is poised for significant growth. The company's focus on premiumization and strategic product launches, coupled with improving market condition, suggests a positive trajectory. अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट स्ट्रांग है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर है। आई वुड सजेस्ट consider adding Tilak Nagar Industries into your portfolio on any significant and meaningful dip. To know more about us, contact us via WhatsApp. The number is 9961616879. तो दोस्तों अब हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ थर्ड लिकर कंपनी जिसका नाम है सुला वाइनयार्ड, इंडियाज लीडिंग वाइनरी, टोस्ट टू रिकॉर्ड सेल एंड फ्यूचर ग्रोथ। Sula Vineyards Limited holds the title of India's largest wine producer and seller as of March 2022. The company's diverse offerings include popular brands like Rasa, Dindori, The Sauce, Satori, Madeira, and Dia. With its flagship brand Sula, credited as the category creator of wine in India, their operations encompass wine production, import, and distribution of wines and spirits, and wine tourism ventures like vineyard resorts and tasting rooms. अब हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ सुला वाइनयार्ड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Sula Vineyards achieved its highest ever first quarter sales at approximately rupees 130 crores, representing a 10% year-on-year increase. Q1 operating profit grew by 10% to rupees 35 crores, maintaining a 27% operating margin. Profit after tax for Q1 was rupees 14.6 crores, a 7% increase resulting in a net margin of 12.7%. Despite challenges like election-related restrictions on alcohol movement and dry days impacting sales, growth was notable in smaller markets like Nashik, Daman, Telangana, MP, UP, Haryana and Odisha. अब हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ सुला वाइनयार्ड का फ्यूचर आउटलुक। Sula anticipates a healthy grape harvest in 2025, the fifth consecutive year of good quality. Plans are in place for new low-cost cellar projects aiming to reduce capital costs from rupees 120 per litre to rupees 80 per litre. While facing challenges like election impacts, regulatory changes in Maharashtra, and temporary closures of bars and restaurants, management remains optimistic. A recovery is expected in the second half of FY25 with double-digit volume growth anticipated as conditions improve. Overall, Sula Vineyards, as the leader in the Indian wine industry, demonstrate resilience and a focus on growth. Despite current challenges, their strong financial performance, focus on premiumization and expansion plans suggest a bright future. अब आप देख पा रहे हैं सुला वाइनयार्ड का टेक्निकल चार्ट स्क्रीन के ऊपर। अच्छी रैली के बाद स्टॉक करेक्शन के अंदर है और नीचे हमें ऐसा लगता है कि 440 445 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लेवल्स आपके साथ शेयर करें अगर आपकी इंटेंशन है इसे खरीदने की, निवेश के लिए ट्रेड करने की,
तो इन लेवल्स को आप प्लीज मतलब कि मद्देनजर रखें, उसके बाद कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। To subscribe our technical analysis course, go to our website iamrakeshbansal.com. Under our offering, click on webinar courses. Our webinar course is named Kurukshetra Win the Battle. शेयर बाजार किसी रणभूमि से कम नहीं है, तो तैयारी जरूरी है। सीखने के लिए subscribe our course. To know more about us, contact us via WhatsApp. The number is 9961617879. तो दोस्तों अब शेयर कर रहे हैं आपके साथ फोर्थ एंड लास्ट लिकर कंपनी का नाम है ग्लोबल स्पिरिट, a 360 degree approach to alcohol, navigating challenges for future growth. Global Spirits operates across the entire alcohol value chain, manufacturing and selling Indian-made Indian liquor, Indian-made foreign liquor, bulk alcohol, hand sanitizers and franchise bottling. A pioneer in setting up a grain distillery and launching branded DDGS in India, the company boasts a unique 360-degree business model. और अभी 2 दिन पहले इसने अपना एक सिंगल मॉल्ट विस्की भी निकाला है, जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ग्लोबल स्पिरिट की financial performance. Global Spirits reported Q1 financial year 25 net revenue of rupees 640 crores, making a 13% year-on-year increase. The Prestige and Above segment achieved sales volume of 0.19, a remarkable 292% year-on-year growth. Operating profit for the quarter was rupees 48 crores, a 33.3% year-on-year decline, with an operating profit margins of 8% compared to 13% in Q1 FY24. Net profit for the quarter decreased by 59% to rupees 16 crores, resulting in a net margin of 2.5% compared to 6.8% in Q1 FY24. अब हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कंपनी का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड आउटलुक। The company shifted its primary raw material from rice to maize, aiming for improved margins. Additional maize inventory was procured to manage raw materials cost in East India. Profitability is expected to increase by 15 to 20% over the next 2 quarters as operations optimize with maize. Global Spirits is actively working with traders and stockists to mitigate raw material cost volatility. The company has expanded into the Goa market, increasing its presence to 7 states with plans to introduce more innovative brands in FY25. Despite challenges from raw materials price fluctuations, particularly maize, management remains positive about margin recovery as maize cultivation increases and operational efficiencies improve. They believe current low margins represent the bottom, with gradual improvement expected as crop cycles stabilize. The company aims for 20% of consumer revenue to come from the Prestige and Above segment, although the exact timeline is uncertain due to growth in both segments. Global Spirits plan to strengthen distribution in existing states while cautiously expanding into new markets, maintaining a balanced growth strategy across regions. Overall, Global Spirits, with its comprehensive approach to the alcohol industry, is navigating challenges and focusing on strategic initiatives for future growth. While facing headwinds from raw material prices, the company's expansion plans, premiumization focus and optimism for margin recovery point towards a positive outlook. अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ग्लोबल स्पिरिट का टेक्निकल चार्ट स्ट्रांग है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है, बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है, तो कोई भी सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल डिप आए तो खरीदारी की राय है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर करे टॉप 4 इंडियन लिकर स्टॉक। दिस इज नॉट अ बाय सेल और अ होल्ड रिकमेंडेशन। चारों के चारों स्टॉक जो आपके साथ शेयर करें हैं फंडामेंटली साउंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। अगर आपकी इंटेंशन इनको बाय करने की है तो प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.